Morning students, Jay Swaminarayan. Thought for the day is expert in anything was once a beginner. Okay, that means someone is expert in that field or individual field, but previously when they started working on that, he was the beginner of that field, and after some time doing more and more practice he will be he should be expert on that field. Okay students, that means practice make a man a परफेक्ट. जैसे जैसे आप किसी फील्ड के बारे में किसी चीज़ के बारे में आप प्रैक्टिस करते जाओगे, दैट मीन्स उस चीज़ में आप क्या कर होते जाओगे, एक्सपर्ट बनते जाओगे और परफेक्ट बनते जाओ. ओके स्टूडेंट्स, लाइक दैट ओनली वेन यू आर doing a maths, you just doing more and more practice. Okay, and when we are doing a practice, then you will make a perfect of that thing or expert of that thing. Okay students, from last week we started our lesson number 4, that is the basic geometrical ideas, and previously we learned geometrical ideas like the line segment, intersecting line, parallel lines, rays, polygons. Okay, and their parts, their angle, triangle, like that. Okay, and last point of that lesson, it's a circle. Okay, circle, it's a two-dimensional structure. For example, suppose that is the bengal. Okay, अगर आप बेंगल को लेते हो, it's a circular part but it's a 2D shape, it does not have width. But ball, suppose you just observe that, you just imagine that is the picture of ball is also having a circular shape but it's a 3D, क्योंकि उसको क्या है, width भी है, उसकी चौड़ाई भी है. Okay, then what is the circle is a simple closed curve which is not a polygon. Previously what is the polygon students? It's a polygon means a line segment या figure या shape bounded या formed by the line segment. ओके, जो लाइन सेगमेंट से फिगर फॉर्म होती है, शेप पॉइंट होता है, दैट इज द पॉलीगॉन. फॉर एग्जाम्पल इट्स अ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर. ओके, सर्कल क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है. प्रीवियसली ऑल्सो हम लर्न दैट इज द क्लोज शेप एंड ओपन, क्लोज कर्व एंड ओपन कर्व. दैट मीन्स सर्कल इज द क्लोज कर्व which is not a polygon and it has some very special properties. Circle having the different and special properties. Okay, first one, here I am drawing a one circle with the center O. Okay, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है and it's a center of the circle, it's a point 1. Every point on that circle having the equal distance from the center. सर्कल के आप सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स प्लॉट आउट करो उसके बाउंड्री पे, दैट पॉइंट्स हैविंग द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट सर्कल. सर्कल के सेंटर से उसका क्या रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा. इज दैट क्लियर? देन पार्ट्स ऑफ सर्कल हैविंग द डिफरेंट मेनी पार्ट्स, दैट इज द फर्स्ट radius, diameter, chord, arc. So first we learn that is the radius of a circle. Suppose I am taking a one point, it's A, other it's a B and then C. Here I am taking the 3 points on that circle. Here, okay, I am just joining that point A, B, C. ओके, विद द सेंटर. सेंटर के साथ अगर हम वो लाइंस को या पॉइंट को ज्वाइन करते हो एक लाइन सेगमेंट्स को, दैट मीन्स अ डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट विद द सेंटर, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सेंटर, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल. मतलब सेंटर से किसी एक पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ दैट
circle. That means in given circle, here in that given circle, CP, CA, CB and CM are the radii of that circle. Radii, it's a plural form of radius. Is that clear? Then next is a diameter. Diameter means what? A line segment joining the 2 points on the circle. सर्कल पे जो 2 पॉइंट्स है उनको ज्वाइन करने वाली विद द सेंटर. ओके, सेंटर में से पास होके 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट रहती है उसको कहते हैं डायमीटर. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे सी ए सी पी सी बी ए रेडियस थी और विच इज द डायमीटर? इट्स पी एम. पी एम क्या है आपका? डायमीटर. ओके, पी एम जो है वो डायमीटर. सेगमेंट पी एम, it's a diameter. Okay, so you just observe that radius and diameter. How we can say that? Yeah, what you can say that its radius is the half of the diameter. Radius जो है वो diameter से आधी रहती है और diameter is the twice of the radius. Diameter जो रहता है वो radius के डबल रहता है. Is that clear? Then next topic, it's a chord. Chord means connecting 2 points on a circle without the center. Previously हमने diameter क्या पढ़ा? Line segment connected to the 2 points with center. Center और 2 points को join करने वाली line segment diameter होगी. But now the line segment joining 2 points, any 2 points on a circle, it's a chord. So here PB, PA, these are the chord of that circle. Is that clear, students? And it is denoted by like that. It's a chord. Got it, students? Then arc of a portion of a circle. Arc is a portion of a circle. सर्कल का कोई कर्व पार्ट लेते हो तो क्या हो जाता है आपका? आर्क हो जाता है. एंड आर्क इज डिनोटेड बाय लाइक दैट. इट्स अ सिंबल ऑफ आर्क. दैट मीन्स पी बी इज द या पी क्यू इज द आर्क. ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय सेमी सर्कल. ओके, a little bit curve part. Okay, then in the case of any simple closed curve you can think of the interior and exterior part of the circle. Okay, जो पार्ट सर्कल ने इनक्लोज किया इट्स इंटीरियर पार्ट और उसके जो बाहर रहेगा इट्स एक्सटीरियर पार्ट. एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज इट्स ऑन अ सर्कल. Is that clear? That means interior region of a circle enclosed by an arc on one side and a pair of radii on the other side. It's called a sector. Got it? क्या कहा है उन्होंने? Interior circle enclosed by arc. Okay, and a pair of radius. A pair of radius. Then the other two sides is called the sector. ये क्या हो गया आपका? Sector. Okay, here already they are given. That means अगर ये कलर पार्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? It's a sector. और ये जो था आपका इट्स आर कर्व पार्ट रहता है उसको कहते हैं आर. ओके, फॉर टुडे इट्स इनफ. व्हाट इज द? it's a middle point of that circle, it's a center of the circle, and every point on the circle having the equal distance from the center of circle, and the line segment joining center to the any point of the circle, it's a radius of the circle. Then the line segment joining any 2 point of the circle with the center, a line passing through the center. That line segment is known as the diameter. Diameter is the twice of the radius and radius is the half of the diameter. Okay, and then the chord, the 2 points, a line segment connecting any 2 point on the circle, that is the chord of a circle.
ओके जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते या ज्वाइन करते दोनों पॉइंट्स को, इन्हीं 2 पॉइंट्स को, तो उसको कहते हैं कॉर्ड. देन आर्क, इट्स अ portion of a circle, it's a curve point, it's a arc. And then interior region of the circle enclosed by the arc, arc की वजह से जो सर्कल का पार्ट इनक्लोज हो गया है, पैक हो गया है, एंड विद दैट रेडियस, और रेडियस के साथ जो आएगा दैट पॉइंट या दैट पार्ट इज नोन एज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल. यहाँ पे जो शेडेड किया है इट्स अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एंड लास्ट पॉइंट, इट्स अ segment. Okay, segment means what? It's a circular region, that means chord with sector. chord और with sector अगर हम लाइन ज्वाइन करते हैं तो it's a one point remaining, sorry, it's a segment region of the interior of circle enclosed by a chord and an arc is called a segment. उसको क्या कहा जाता है? segment कहा जाता है. Is that clear students? And the distance around the circle, जैसे कि मैंने पहले कहा पैरामीटर मीन्स क्या होता है? लेंथ ऑफ मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द figure, that is the parameter. Same like the boundary या measurement of the boundary of the circle, it's called the parameter. Sorry, not a parameter, a specific word is there, it's a circumference of the circle. Okay, what is the circumference of the circle? Measuring the boundary, measure the length of the boundary of the circle, it's a circumference of the circle. Is that clear? Like that our lesson basic geometrical concept also completed, and next period we started our the exercise based on that, that is the 4.6. Okay students, thank you.